अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे। हम आपको थोड़ा सा जवाब देते चलते हैं। कॉल्स अगर आपको यहाँ कॉन्टैक्ट करना है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे होंगे स्क्रीन पे, हमारा ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा, वो भी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। पहले हम शुरू करते हैं। जो कॉल आई थी हमारे पास, सबसे पहले कॉल आई थी आसिफ साहब की। उनके जो वर्क परमिट का उनका रिफ्यूज एंड दैट वन ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने एप्लीकेशन दी शायद साहब। Looks right. Like a judicial review. Judicial review. We'll have to look at his letter of refusal just to get a little bit of a background on the case or the matter. So definitely, हम इनको help कर सकते हैं if that's what he wants. But we need to actually need further information from him before we can advise him. So ये आसिफ साहब आपने जो कॉल करी थी, आपका जैसे हमने कहना it looks like more than likely judicial review, तो आप हमें कांटेक्ट करें ऑफ है, we'll be more than happy to help you. सज्जाद अली साहब का जो कॉल आया था, he said student visa options, I think entrepreneurial. Yeah, 8.5 years हो गए इनको. Students are allowed to switch into another category, which is obviously entrepreneur visa is one of them. I think the इनका option ये हो सकता है graduate entrepreneurial, he can move into that. Yeah, if he's already a graduate, yes. Yeah. सज्जाद साहब अगर आप watch कर रहे हैं, आपको बता दें कि इनको entrepreneurial and we can help you with that one. कॉल आ रही से शामिल करते फिर हम continue करेंगे. Hello. Hello, क्या मुझे जो आपका legal matters में कॉल कर सकता हूँ? जी, you are actually on air. आप legal matters के प्रोग्राम में इस वक्त on air हैं. आप अपना नाम बताएं, क्वेश्चन बताएं प्लीज। मैं अली बात कर रहा हूँ। जी जी। और मुझे 2 सवाल करने थे आपसे। एक तो ये कि मैं लो इनकम सपोर्ट लेता हूँ और मैं रेंट पे कौंसलरों के रेंट पे मैं मकान लिया था। तो एक तो नवंबर से उन्होंने मुझे रेंट नहीं पे किया था, दूसरा ये कि मुझे ऑनर ने मकान खाली करने के लिए बोल दिया, तो मैंने मकान खाली कर दिया था। ठीक है। तो जो एग्रीमेंट होता है वो मेरे से लॉस हो गया और ऑनर से भी लॉस हो गया, तो वो जो कैसे मैं कहाँ से ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने कौंसिल में पहले जमा कराया था। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने जो नया मकान रेंट पे लिया है वो नवंबर से लेके अभी तक मैंने जो है मुझे कौंसिल से कोई हाउस रेंट वसूल नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कहा जब भी मैं उनको पेपर जमा कराता हूँ तो मुझे कोई ना कोई पेपर वो लेटर भेज देते हैं कि ये पेपर जमा करा दो, ये पेपर जमा करा दो। मैं हर दफा हर पेपर जमा करा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे अभी तक कोई वहाँ से रेंट वसूल नहीं हुआ है। तो जो नया मेरा ऑनर है वो भी मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप मुझे रेंट दें, तो लिहाजा मैं फोन ऑफ करूंगा तो फिर मैं आपका अली साहब थैंक यू। आप ये थोड़ा जवाब सुनूंगा। जी जी, आप टेलीफोन ऑफ करने से पहले अपना पूरा नाम बताएंगे, बिकॉज एक दो और हमारे पास कौन आ चुके हैं अली नाम के। अली मलिक। अली मलिक। अच्छा आप ये बताएं आपको क्यों क्या था मकान खाली करने के, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि उनको रेंट का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि कौंसिल से मुझे रेंट जो है नहीं मिल रहा था। तो कौंसिलर को मैंने बोला था, फिर कौंसिलर ने मुझे तकरीबन 6-7 महीने का रेंट जो है मेरे ऑनर को दिया। तो ऑनर का जो है ना हमने कौंसिल ने मुझे पेमेंट की थी, तो हमने डायरेक्ट मेरे ऑनर को दी थी। ठीक है। तो उसके बाद ऑनर बोलने लगा मैं अब प्राइवेटली दूंगा, क्योंकि मैं जो है कौंसिल के थ्रू नहीं दूंगा। ठीक है, ओके ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल हमारे पास करने का। आपका सवाल आ गया, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे कि वॉचिंग प्रोग्राम। जी एक और कॉल आने से शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपनी टेलीविजन की आवाज़ ज़रा कम कर दें तो हमें आपकी आवाज़ यहाँ स्टूडियो में क्लियर आए। जी वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन कहाँ से? मैं मुजस्सर से बोल रहा हूँ। बात अच्छा, अपना नाम बताएंगे? तनवीर बात। अच्छा, क्वेश्चन बताएं। हाँ जी, पता ये करना था कि कल मुझे किसी ने बताया कि मेरा भाई है छोटा, वो स्टूडेंट आया हुआ है इधर ना, तो किसी ने मुझे बोला कि आपका कोई रिलेटिव जो यूरोपियन हो तो वो उसको इंग्लैंड में ना 5 साल के या 5 साल का वीजा दिलवा सकता है। इसका क्या तरीका कार है, कुछ पता है आपको? ये आप पूछ रहे हैं, आपके भाई आए थे वो यूरोपियन वीजा के बारे में पूछ रहे हैं, इज दैट राइट? हेलो जी जी, थैंक यू। आपकी कॉल चली गई, एक और कॉल शामिल करते हैं। हेलो सॉरी, could you say that? Welcome to the program. Can we have your name? You're actually on live on air at the moment on the Legal Matters program.
Okay. Sundays. Sundays? Yeah. Can we have your question, please, and your name, please? I'd like to know, as a new landlord, what advice I can have about letting a property. Okay. What the new law is. Okay. And can we have your name, please? Sorry? Can we have your names? My name? Yeah, please. Sundays. Sundays. Okay, thank you. Okay, so next we'll tell you what the rules are, and we'll explain as a landlord what you need to do. So keep watching the program. Thank you for your call. Okay, thanks. Shukriya, bye-bye. Okay. Bye-bye. Shahid, obviously we need to go through some of these questions. हम अपने व्यूज़ को यही कहेंगे कि अगर आपके पास कोई questions है, आपके पास related to legal issues, we're more than happy to help you. हमारे पास जो कॉलें आ रही हैं is on different issues, we'll be more than happy to help you in employment, debt recovery, wills, probate, जो भी है आपके पास इनके matters, we're going to discuss that further. तो ये जो अमरीन की जो कॉल आई थी शायद basically वो बात कर रही थी 10 years हो गए, इनको 7 years हो गए, English language test के बारे में she was asking about. I mean English language test level 2 ये कह रही थी. Level 2, yeah. The criteria is that it should be B1 अगर it corresponds to European framework of English language to level B1, then she should be okay. She just needs to check with the course provider that it is up to level B1. So if there is any doubt, they should be able to verify that. तो मतलब वो अमरीन को contact करने की ज़रूरत है, just check करने की verification. Yeah, whether it is up to level B1. Yeah. English literature she was talking about. English language. Language, yeah. Yeah. That's right. And life in UK test. Yeah. That's right. तो आपको question का जवाब मिल गया होगा, आप अपने उनसे provider से पूछ लें, and they will be able to help you and tell you what the level. I mean, the other question she had was about life in UK test. Life in UK test is when you going for actually indefinite leave, or for the British nationality. So if it's only an extension, it's not really a requisite to have a life in UK test. But obviously, if she passes it now, it will help her later on, because you only need to pass it once. You know. जी, और हमारे पास जो दूसरी कॉल आई थी जो लेडी थी सीमा, उनकी जो कॉल थी लाइफ इन यूके टेस्ट नेचुरलाइजेशन मेडिकल कंडीशन पे there is you know exemptions. Not all medical conditions fall into the exemption category. The criteria is very clear and strict. अगर आपको English language सीखने में कोई problem हो रही है because of your mental health illness, then that will qualify. अगर आपको वैसे ही कोई है depression वगैरह, then it doesn't constitute as relevant factor for seeking exemption. Yeah, so it has to be a more severe than as opposed to just having depression, quote unquote depression. I think medical condition has to be sustainable. Yeah, so it has I mean it is like if you've got a considerable memory loss, i.e. you're suffering from dementia, Alzheimer's disease, you know, where you can't even remember the names of the people or faces of the people, or you get disorientated in familiar you know, environment, then that kind of threshold is what the Home Office is looking for before they'll grant you exemption. बिल्कुल, इसका जो medical condition होती है वो तो एक उनके पास एक criteria है. That's that right. You have to be of that level. Yeah, I mean if you're over 65, then you're exempt. Automatically on that. You're exempt. So you can go on the grounds of age. If you're over 65, you don't need to. I think Seema की जो call आई थी, I don't think आप qualify करती हैं उसमें for medical exemption. आपका दूसरा सवाल ये भी था council property के visitor को बुलवाने के accommodation के. Again, I mean if it's a council property, you can go and speak to the council, explaining that you want to call over a visitor, and if they can provide you with a no objection letter, because that's what the Home Office is looking for. Council being the landlord, they need to give you a consent letter that they don't have any objection to you inviting a relative for a short stay. And also that accommodation के वो ये भी दिखाना चाहती है, she has got the sufficient accommodation. Yeah. ये दोनों चीज़ें cover कर लेंगी. Yeah. एक ही लेटर में वो ले लें बजाय दोबारा उनसे कांटेक्ट करने के. तो सीमा बहन आपको मिल गया होगा जो आप around your questions. अली साहब का जो ब्रैडफोर्ड का था, tenants 6 months ago, no rent in arrears.
और अब उन पे काउंटर क्लेम और लेट्स जस्ट गो इन टू पार्ट्स पहले इसका पार्ट करते हैं matters. I mean, exactly rent if you've not received any rent for 6 months, that is a very long time. Normally if you've not received rent for 2 months, that in itself is a ground for you to start eviction proceedings. अगर आपके solicitor या agent ने सही जो है वो eviction notices serve नहीं किए, then you can contact us and we'll be more than happy to help you get your property back. That's one. Secondly, the theft part of your question, if somebody is alleging theft, then they have to actually prove that you actually did take that property away. If you just binned it and you thought that it was just rubbish, then that shouldn't constitute as theft, because theft is actually depriving somebody of their rightful possession. So if it was found in the back garden and you thought it was just general rubble or rubbish and you just put it in the bin, then you were acting within your rights to keep the house clean and tidy. So she would struggle to make a successful claim against you in terms of theft, you know, because you can just turn around and say that. शायद सब कॉल आ रही है, शामिल करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं. Hello, welcome to the program. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? You know, my name is Nazima. I have a question. You know, we've been here, like my husband was a student. Yeah. And then we've been here for 9 years. Okay. I got 2 daughters. Yeah. But you know, we have son of the 7 years. You know, 7 years if your child been here. But unfortunately, I've been refused because my daughters was over 18. Okay. So I'm just thinking, because she will finish her A levels this year. So can I make them go to universities, and can they go for, can I change them from dependent to be student? Can they go on student visa? Okay. Can I go on student visa? Thank you, Seema. शुक्रिया आपका क्वेश्चन का, हमें मिल गया. आप की वॉचिंग प्रोग्राम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह. ओके, एक और कॉल आ रही है, शामिल कर लेते हैं. हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं बैकबोन से बात कर रही हूँ. आप मुझे पता चला कि 2009 में मैंने शादी किया था, मैंने और मेरी छोटी बेटी ने, और हमें रेफ्यूजी स्टेटस मिला था. और अगस्त में ये मतलब कि मुझे दोबारा अप्लाई करना है इंडेफिनिट की. तो मुझे ये पता वो दिन पड़ेगा, कागजात वगैरह लगा के मुझे भेजना होंगे. ओके, ठीक है. आपकी आवाज़ बहुत ही रुक के आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है. आप अपना नाम बताएंगी प्लीज़? जी मेरा नाम रेहाना है. ओके. और फिर से बताऊं सारी बात? जी जी. 2009 में मैंने असाइलम किया था अपनी बेटी के साथ, और मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला था यहाँ पर. ठीक है. जो कि अगस्त में 5 साल पूरे हो जाएंगे, और मुझे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है. तो मैंने पता करना था कि कौन कौन से कागजात लगाने होंगे, और मुझे कितने दिन पहले ये सब कुछ करना होगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम है. इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन आगे रेहाना पाजी आपके वॉचिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे. ठीक है, शुक्रिया. ओके, एक और कॉल आ रही है, शामिल कर लेते हैं हम. जी हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपना नाम बताएंगी? जी मेरा नाम समरीन है. ओके, वेलकम टू द प्रोग्राम. सॉरी, वेलकम टू द प्रोग्राम समरीन. आप अपना क्वेश्चन बताएंगी? जी हाँ, मुझे ये पूछना था कि मैंने मेरा इंडेफिनिट 2012 में हो चुका है, और वो ई सोल बेस पे हुआ था. ई सोल, ठीक है. ई सोल लेवल 1 में मेरे पास सर्टिफिकेट था, उस बेस पे मेरा हो गया था. ठीक है. लेकिन अब नेक्स्ट ईयर जो है ना, नेक्स्ट ईयर जो अब मुझे मेरा जो है नेसेसिटी ड्यू है जी, और ये जो टेस्ट है B1, और मैंने वो लाइफ इन यूके भी जो था वो मैंने कर लिया था इंस्टीट्यूट में, और लेकिन वो उसका सर्टिफिकेट मगर उन्होंने इंस्टीट्यूट वालों ने अपना दिया था, ट्रिनिटी कॉलेज से मुझे नहीं मिला था. ठीक है. तो अब मुझे ये मालूम करना है कि ये जो नया रूल रेगुलेशंस में B1 या B2 का जो करना है, कि इसमें मुझे क्या करना होगा, ये कोर्स करना होगा, लाइफ इन यूके मुझे करना होगा नहीं, ये मालूम करना था. ठीक है. आप समझने की वॉचिंग प्रोग्राम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. हमारे पास आगे इंशाल्लाह आपको अभी जवाब देंगे कि वॉचिंग.
शायद ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, वी कैरी ऑन विद दैट। हमने सीमा को बता दिया था एंड उसके अलावा जो हमारे पास अली साहब का जो थेफ्ट का था वो भी हमने जवाब दे दिया है। अगर अली साहब फ्रॉम ब्रैडफोर्ड आप वॉच करें दैन आप प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करें, वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस लिटिगेशन मैटर है आपका लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डिस्प्यूट। और आपके जो रेंट अरेज के बारे में अगेन वी कैन हेल्प यू विद दैट। आपका जो इस पर सर्व करते नोटिस हम आपको ये डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अहमद साहब लंदन के जो आए थे उनके जो कॉल आई थी शायद साहब ह्यूमन राइट्स पे उनकी एप्लीकेशन थी, 10 साल हो चुके हैं उनके, and what advice we're going to give him to? Again, I mean, we need more facts before we can give him, you know, a comprehensive answer. Normally, if the child has been here for 10 years, that's long enough time for them to be granted leave to remain here. But obviously, if it's been refused, then we need to look at the letter of refusal. ये जो इनका MS साहब का जो लंदन में human rights पे उनको जो वो क्या put an application in. Yeah, we need to look at, you know, obviously. I think the information जो थोड़ी कम है, we need a little bit more. MS साहब from London, you're watching the program. आपको हम यही advice देंगे that please हमें contact करें। आपका केस में we can advise you, but we need more information. So please हमें contact करें। अली मलिक के जो कॉल आई थी, income support, rent from council. You know, on this one we need to. Yeah, this is a welfare and benefit advice question. So normally, if you are receiving rent directly from the council, and the rent is at least 2 months late, then the landlord can put a request to the council that the council should pay the rent directly to the landlord, and the council will then, as long as you don't have any objection to that, then the council will carry on paying your rent directly to the landlord. So you can discuss it with your landlord, tell him that you are happy to go along with him to the council and give your consent that the rent is paid directly to him. और ये इन situations में हम व्यूअर्स को बताते चलें तो अगर आप लैंडलॉर्ड के अगर rent 8 weeks and above हो जाए then by law he can request the rent to be paid directly to the landlord. और जैसे हमारे कॉलीग ने आपको बताया था, आप उनको कांटेक्ट करें, अपने जो सिटी काउंसिल है उनसे बात करें with the landlord that आप rent pay करना चाहते हैं direct to the landlord, and this should not be a problem. That should be okay. I think we got a call from Mr. Butts up to Europe. Yeah, उनका भाई स्टूडेंट वीज़े पे है, वो चाहते हैं कि अगर उनकी किसी यूरोपियन उनका कोई यूरोपियन रिलेटिव है तो क्या implications हैं, क्या हो सकता है। तो obviously the law is there if you have a genuine and subsisting relationship with an EU national, and the EU national is exercising their treaty right in UK, i.e. they are full-time employed, self-employed, or they are full-time in education, and they have a non-EU relationship with another person, then they can they can actually apply for the थोड़ा सा उर्दू में बताएंगे because अपने व्यूअर्स को बताते चलें थोड़ा सा, so both language में उन्हें मिलता रहेगा जवाब। ये अपने तवीर बट साहब के बारे में यूरोपियन वीज़ा में उर्दू में ये मैं कहूँगा कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप नॉन EU रेजिडेंट हैं, यानी कि आप यूरोपियन यूनियन से बाहर से आए हैं और आपका कोई जो रिलेटिव है वो यूरोपियन यूनियन का नेशनल है, तो उस सिचुएशन में आपका जो यूरोपियन यूनियन नेशनल रिलेटिव है वो आपकी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है होम ऑफिस के साथ कि क्योंकि वो आपके साथ रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे रहने का राइट दिया जाए। तो देयर इज़ अ वे टू डू दैट, बट इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एक कॉल आ रही है, शामिल कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट कॉल है, लेट्स टेक दिस कॉल क्विकली। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन कहाँ से? I wanted to know something about an immigration case. जी जी बोलें, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम। ओके ठीक है, शुक्रिया। आप अपना क्वेश्चन बताएं। Can we have your question? मेरा नाम, आपका नाम हमें मिल गया, आप अपना सवाल बताएंगे प्लीज। टाइम बहुत शॉर्ट है, हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपील की हुई है मेरी बेटी के लिए जी, शादी हुई है, तो अब तक जवाब नहीं आया, 5-6 हफ्ते हो गए।
आपकी बेटी की शादी के बारे में आप पूछ रही, तो उसकी शादी हो चुकी है और उसकी अपील करी है। पहले उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो अपील कर दी, ये सॉरी मोहम्मद साहब, ये मुझे बताएं शादी का आपका स्पाउस का ये और जो ना आपने अपील करी ये कौन से क्यों रिफ्यूज़ कराई, व्हाट्स होम ऑफिस से क्या लिखा है, क्यों रिफ्यूज़, ये थोड़ा सा हमें बताएं जो हम आपको गाइड करें। ये वकील ने अपील की है, अब तक जवाब नहीं आया कोई। जी अच्छा, आपका जवाब नहीं आया, चलें ठीक है। एप्लीकेशन कौन सी डाली? एग्जैक्टली, स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन डाली थी। आवाज़ नहीं आ रही साफ आपकी। आपने स्पाउस की एप्लीकेशन डाली, स्पाउस वीज़ा की डाली थी एप्लीकेशन? पहले मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो हम उन्होंने वेज स्लिप का मसला था, तो हमने वापस भेज दिया। ठीक है, समझ गया आप। अब तो जवाब नहीं आया। थैंक यू, आपका सवाल हमें आ गया वेज स्लिप्स के बारे में, स्पाउस वीज़ा। आप ये बता दें आपने अपील कब करी थी, वो कौन से पीरियड में करी है? 6 वीक्स अगो। ठीक है, ओके देन, शुक्रिया आपका क्वेश्चन के, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह अब हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते बिकॉज ऑब्वियसली टाइम रन आउट हो गया। कोशिश ये करेंगे जो हमारे पास सवाल आए उनके जवाब दे दें और फिर आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो कॉल नहीं आ सके माजरत कर दें। अच्छा, जो कॉल आई थी हमारे पास जो दूसरी ये बर्थ साहब का हो गया, संडे कॉल्ड अबाउट रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड्स to be a new landlord. Well, if you're a new landlord and you want to rent a house yourself, i.e. as opposed to letting it through a letting agent, then what you need to do is you need to make sure that you've got ID of your prospective tenant, because obviously if in the future down the line there is some issues, the tenant doesn't pay you the rent, then and you want to evict them, you would at least need to have their ID to pursue them further. So that's one thing, an obvious thing to ask for. Secondly, if you take a deposit of them, the deposit needs to be then put into a deposit scheme within the 30 days. If the tenant causes any damage while they are residing in your property and you want to make a claim against their deposit, you need to have a written what's the phrase I'm looking for? Inventory. You need to have a written inventory if you want to make a claim against their deposit. So, and obviously you've got to have a tenancy agreement in writing where you says that the rent is due and the rent should be paid on the due date. And I think we should add on to that one to Sundays will be that she takes on a short hold tenancy. Yeah, so she takes a short hold tenancy and takes some witness signatures and IDs just to safeguard the interest for the future rules which are coming in to verify who's who and what's what. So thank you for your call. आगे चलते हैं, जो नसीमा की जो कॉल आई थी, 9 years been here, 2 बेटी हैं, she wants to make it non-dependent, want to go to university. Student as I mean their own status is not settled. I mean the impression I got was they are here for 9 years. The daughters did apply for their status to be regularized under the 7-year rules, but when they came here they were already over age and they are over 18 now. So it's not as straightforward, because if when you're applying for a student visa, you can't just automatically apply for a student visa if you are already an overstayer. Or if your immigration status has not been regularized, you can't just switch from being an overstayer or outside the normal immigration rules to being a student. Yeah, that application would be refused. So what you need to focus on is actually trying to get your immigration status regularized, under Article 8 of Human Rights, because you've been here, you've got established life in UK for a number of years, and once that has been addressed, then they would be entitled to pursue their studies anyway. Exactly. I think Nasima Ben को हम यही advice देंगे, आप हमें contact करें, because there's a lot of information we still need आपको सही advice देने में, and we can help you in this matter. So do call us regarding your situation. मेरे colleague ने आपको explain कर दिया था what you need to do. And Rehana जो asylum, she got asylum in 2009, refugee status, and उनका यही था to application for indefinite leave to remain. What papers they need to submit? I mean, there is a whole list of supporting documents.
They need to show that where they've been living for the last 5 years. The simple thing is that they can apply within 28 days prior to the expiry of their visa. I think वही because वो तो application में जो उनको details देना पड़ेंगे उसमें ये लिखेंगे कि आप 5 years से किधर रह रहे थे, reside किधर कर रहे थे, और आपको अपना जो होगा ना the important part जो शायद ने mention करी थी. I mean the application for ILR for refugees is a slightly different application than the application for ILR for everybody else. In that application, you will be able to see what documents, supporting documents, the UKBA Home Office is require from you. So just follow the checklist. Inshallah, that should be okay. And Samrina called 2012's got indefinite leave to remain, done ESOL B1 language and life in UK test. Yeah, I mean the rules have changed from October last year. Everybody knows that now. So she will have to pass level B1, and also she needs to do life in UK test. Oh, बिल्कुल. जी हमारी last call जो हमने ली थी मोहम्मद साहब की wage slips I think it's a dispute. Yeah, I mean 6 weeks is not long enough for him to hear a response back from Home Office. Yeah. He needs to wait 2-3 months maybe. Yeah, minimum. मोहम्मद साहब, thank you for your calls. हम सबका शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें कॉल करी हैं. बहुत सारे कॉल नहीं ले सके again time की वजह से. But we're going to be here next week. We're going to take on these legal issues regarding immigration, litigation, representation. Again, हम अपने views से माजरा करते हैं जो कॉल नहीं ले सके because of the time shortage. हम कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा questions लें और आपका जो time होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा information आपको दी जाए. मगर कुछ ऐसे होते हैं सवाल जहाँ पे आपको हमें ज़्यादा डिटेल्स देना पड़ती है, तो अगर आपका जवाब शॉर्ट हो तो आप हमें कांटेक्ट करें. ऑफ है और वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. कांटेक्ट आप ले सकते हैं हमारा कंट्रोल रूम से. सो आइंदा के आप हमें इजाज़त दें. नेक्स्ट संडे कीप वाचिंग लीगल मैटर्स कानूनी मशवरे. myself and my team will be here to discuss legal issues related to anything you may have which affects you. So give us a call. We'll be more than happy to help you. Next week इजाज़त दें कानूनी मशवरे के लीगल मैटर्स के. खुदा हाफिज़.